Namaskar. Good evening to all the viewers of Parent Station. I am Arti Gautam. I am a founder director of a preschool here in Vadodara. I am an early educator and admin mate Parent Station from Vadodara chapter. So once again, I welcome you all. I'll be taking the session in Hindi and English both. पेरेंट स्टेशन का हमेशा का यही ऑब्जेक्टिव रहा है टू रीच एज मेनी पेरेंट्स एज वी कैन। आपकी पेरेंटिंग जर्नी को और जॉयफुल बनाना चाहते हैं और आपकी पेरेंटिंग जर्नी में आपको जो भी कंसर्न्स हैं उसके लिए हम हेल्पफुल और एज अ सपोर्ट रहना चाहते हैं। पेरेंट स्टेशन के इस माध्यम को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकेंगे वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स जो पेरेंट्स हैं। सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द ऑडियंस जो हमें वॉच कर रही है, हमें देख रही है। हम बात करें 2020 की, तो 2020 में हमने और हमारे बच्चों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी और इनके साथ साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस भी फेस किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी और हमारे बच्चों ने भी सीखी, दैट वाज द न्यू वे ऑफ लर्निंग, जिसे हम वर्चुअल वे ऑफ लर्निंग कहते हैं। पूरा साल हम बच्चों के पीछे पड़े रहे एज अ पेरेंट कि बेटा थोड़ा सा ठीक से बैठो, थोड़ा सा सीधा बैठो, लेट कर मत पढ़ो, चेयर पे बैठ के पढ़ो, टेबल का सपोर्ट लो, क्योंकि ऑल द टाइम हम पेरेंट्स वरीड थे कि हमारे बच्चों का जो पोस्चर है वो सही रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो पोस्चर है वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो आज यही टॉपिक लेकर पेरेंट स्टेशन आपके साथ कुछ शेयर करेंगे हम। और हमारा जो आज का एक्सपर्ट टॉक है, इट इज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर इन चिल्ड्रन। और ये एक्सपर्ट टॉक के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट, वो हैं डॉक्टर नीलिमा पटेल। डॉक्टर नीलिमा पटेल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पेरेंट स्टेशन में। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। So before we start, I would love to introduce ma'am, but because she's an excellent personality और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मैम जो हैं ये फेलो ऑफ इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपी से कनेक्टेड हैं। ये एक्स प्रिंसिपल और एचओडी रह चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वडोदरा से। इन्होंने एक किताब लिखी है योगा एंड रिहैबिलिटेशन के नाम से। 2008 में जब हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री थे जी नरेंद्र मोदी जी, तब मैम को उनके तरफ से अप्रिसिएशन लेटर भी रिसीव हुआ है। मैम को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजित किया गया है और उनमें से कुछ है राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, मैम को फिजियो रत्न अवार्ड मिला है, मैम को प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से नवाजा गया है। इनको 6 बार लगातार सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी का अवार्ड भी उससे नवाजित किया गया है। मैम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजित किया गया है। मैम ने 150 से ज्यादा वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं फिजियो, योगा और रिहैबिलिटेशन में ऑल अक्रॉस इंडिया। सो मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन पेरेंट स्टेशन and thank you so much for accepting our invitation. My pleasure to reach out to the community. Thank you so much, ma'am. So अब मैम आपसे चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले वैसे हम सारे पेरेंट्स और हम सब जानते हैं कि पोस्चर क्या है, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है, क्या आप उनके लिए डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज पोस्चर? Yes, very important question you have taken up today. People think posture as just a body alignment. As you rightly said, every time we are told, or the children are being told, the सीधे बैठो, सीधा सो, या सीधा खड़े रहो, सीधा चलो, ऐसे मत करो, ये मत करो, right? Because most of us consider posture as just a simple body alignment. But as a physio student, I still consider myself as a student only. But as a physio student, I always feel posture is reflection of our inner self. Posture is communication. Posture is gesture. Posture
is the root element of our good health. And our good health is a result of our disciplined lifestyle. So you can जी understand that it is just not a body alignment. Posture can also be explained कि how is your mechanical efficiency, आपकी fatigue patterns क्या है, how are you working, how are you sitting, what is the stress coping mechanism. Stress is in everyone's life, but what are your coping strategies, how you look up to life as. That is another important aspect. Then जी sleep also has a very important role to play for a good posture. You can imagine, okay, suppose if you had a very bad sleep, if you had a disturbed sleep, and morning when you wake up, you are likely to slouch little. But if you had a good sleep, you feel fresh, you feel energetic, automatically your shoulders go broad, your head goes high, and you are able to maintain a good posture. Quality of sleep also has a very important role to play in a posture. So, because you asked me what is a posture, it is just not only a body alignment. And most important thing, definitely the musculoskeletal framework is necessary, the neuromuscular coordination is necessary, but most important, it is the balance between the four vital systems of the body: राइट respiration, circulation, digestion, and excretion. सपोज जी आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका मॉर्निंग स्टूल क्लियर पास नहीं हुआ है, मे बी अ डे और टू, एंड व्हाट हैपेंस, यू आर बाउंड टू अगेन गो kyphotic. Suppose you have a breathing issue, right? Your breathing rate, rhythm, and depth is not good. You're likely to slouch. Your shoulders are going to be round. So, posture is a gauge of so many things. It is just not a simple body alignment, a skeletal framework. No, so many things are responsible for a good posture. I can speak for hours, but I can understand you might be having many questions. बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम आप कि ये पोस्चर जो है वो सिर्फ बॉडी अलाइनमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी शरीर की चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं और काफ़ी इलैबोरेट मैम आपने समझाया। मैम बात करें अगर पोस्चर और पोस्चरल की, तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज़ द डिफरेंस? Yes. See, posture is a correct posture, but when you come to the guidelines, always the word is postural exercise, postural correction, postural awareness. The postural word जुड़ जाता है. तो जी, ये आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक को छेड़ा है. तो जब आप हिंदी मूवीज देखते हैं, हाँ, तो किसी को शॉक लगा है या कोई डिस्टर्ब है, तो वो चलता है ए मेरे दिल कहीं और चल, तो रोता रोता ऐसे चलता है. कभी जो एकदम खुश मिजाज है, कुछ प्रमोशन मिला है या कुछ सक्सेस मिली है या किसी ने कुछ अच्छा सा कमेंट दे दिया है, मैं जैसे अभी बोल नहीं सकती, तो द पर्सन इज वॉकिंग विद सो मच ऑफ हैप्पीनेस. तो ये पोस्चरल है. So posture, definitely postural has a very deep meaning. It has a holistic meaning. So when you जी, say postural, it is the alignment of the body that reflects the structure of the body. जो जी, बोन्स और मसल से बना हुआ हमारा शरीर का ढांचा है, तो दैट इज स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, पोस्चर. बट जी, डेफिनेटली पोस्चर also reflects, when you say postural, it हुँ, reflects attitude of the body. अगर मैं my attitude is narrow, if then definitely I'll be having a very tense muscle. But I am a broad-minded person. My shoulders are going to be broad. The face glows. There's blushing always. Can you understand? That is what is this mind. Your mind is important. And the third जी, important aspect, the spirit within, is how you carry your body. आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो. कभी हमने सुना है कि दिखता तो ऐसा है, दिखती तो ऐसी है, बट एकदम स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी जबरदस्त है. See the जी, word personality. So हुँ। postural, when we talk about, it reflects the body, mind, and spirit, all the three. This is the basic difference between posture and postural. Okay. एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया बता रहे हैं मैम क्योंकि ये डिफरेंस हर किसी को पता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि पोस्चर और पोस्चरल के बीच में क्या फ़र्क है? मैम Yes. काफ़ी सारी डिटेल आपने बता दी है। आई थिंक ये हम आज बात तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये हम एज़ एन इंडिविजुअल भी इससे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं। अब आते हैं बच्चों पे मैम। बच्चे जब चलने की स्टेज में आते हैं, यानी कि पहले वो क्रॉल करते हैं, फिर वो बैठते हैं, फिर वो चलते हैं। तो जब वो चलने की स्टेज पे आते हैं, तो नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो बहुत
क्यूरियस होते हैं उनको वॉकर्स देने के लिए, जो जिसमें बैठ के बच्चा चलना सीखता है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आजकल मैंने काफी पेरेंट्स को भी सुना है और पीडियाट्रिशियंस को भी सुना है कहते हुए कि भाई वॉकर्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, उनका पॉस्चर खराब हो जाता है, उनके पैर चौड़े हो जाते हैं। तो मैम इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? यही मैं बताना चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट क्रॉलिंग पे और वॉकिंग पे आए। मैं तो ग्रास रूट लेवल पे ही जाती हूँ, राइट फ्रॉम जी द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ। जी पोस्चर बिगिंस राइट फ्रॉम द मदर्स कंसेप्शन। तो उसके डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन बच्चे का जब जन्म होता है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बर्थ, today's modern style, the types of cradles that are being used everywhere, the rectangular flat cradles, a very wrong way of using. Ideally हमारे जमाने में जो था कि we call it as old traditional way, the cradle घोड़ियों। had to be, हाँ, जो घोड़ी, जिसको हम घोड़िया कहते थे, हाँ, जी definitely it has to be of that shape and structure, because the child was in the mother's womb, and he or she had a C-shaped curve of the spine. And suddenly, because of the style and fashion and modernization, directly you put the child into a flat position. There is always a state of alarm of the child. The child is always in a state of feeling insecurity, and that's the जी reason. जैसे ही shoulders ऐसे रहते हैं, the head starts going behind, and you start developing a hyperextended spine. This is the basic thing. But if you keep in the old traditional cradle, see, you जी are giving a very secured position to the child. The feeling of security, that there's good sleep. The curve definitely is maintained the way it has to be. And as I said, sound sleep is the key element of maintaining good posture, whether as a child or whether as an adult. फिर हम देखते हैं कि द मदर, हाउ द मदर लिफ्ट द चाइल्ड। तो कभी कभी हम देखते हैं कि मदर डायरेक्टली ऐसे कंधे से उठा लेती है चाइल्ड को। दैट ऑल्सो causes some shoulder muscle laxity. So always when the holding of the child has to be there from the cradle, the mother has to have this grasp and then pick up the child and lay the child on the bed. ये सब छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ, ये these are covered up more in the workshops, but these are some important aspects. फिर हम देखते जी हैं कि चाइल्ड को फीड के वक्त भी, अभी हम देख रहे हैं कि फीडिंग पोजीशन, first the mother used to completely concentrate on the breastfeed and all this, but things have changed because of the demand of the situation, working mothers है, काफी कुछ ये हो रहा है। तो the feeding position also, the head has to be little bent, chin, and then the feed has to, अभी क्या हो रहा है, बॉटल फीड दे रहा है तो हेड ऐसे जा रहा है और बॉटल फीड, तो द पोस्चर माल अलाइनमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और फिर हम देखते हैं कि क्रेडल के बाद भी जैसे आपने बताया टॉडलर पे रख दिया जाता है, वॉकिंग फ्रेम पे रख दिया जाता है, बिकॉज द मदर इज वर्किंग। सो व्हाट हैपेंस, हमारा डेवलपमेंट पहले सीधे से फिर उल्टा, उल्टे से डेवलपमेंट हुआ है, क्रॉल, क्रॉल टू सिट, सिट टू हाफ स्टैंड और स्टैंड। So that is how the postural reflex develops, and that is how the postural muscle starts maturing. अभी डायरेक्टली हमने उसको टॉडलर सीट पे बिठा दिया, तो व्हाट हैपेंस, यू आर पुटिंग एक्सेसिव डिमांड on the legs, and if the legs are not stable, when the person starts walking independently, what happens, the slouching starts happening. And एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, દીકરાના પગલા પારણે થી અને વહુના પગલા બારણે થી. See, very very important quote. Our feet are जी said to be the foundation, our legs are जी the pillars, and spine is the apartment. So if the जी foundation itself is not mature, if the pillars are not strong, the apartment is going to be unstable. So that's the राइट reason we should allow the child to mature according to developmental ladder and not directly put the child. We are giving a great harm to the child. This is another important. So psych also आ गया, एक sleep pattern with the cradle, feed pattern, food as a nourishment, and at the जी same time, growth and development both needs to be taken care of, just not the physical growth. Okay, वेरी ट्रू। there are आप many बहुत aspects. जी जी Hmm. मैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और जो आपने क्रेडल की बात करी, घोड़ियामा सुवा ने आपने बात करी कि जब वहां पे जब बच्चा सोता है ना तो वो बहुत कोजीली सोता है। मैम बहुत Yes. सही बता
रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा हमें साइड में आप देखें, अगर वो रेक्टेंगल हम क्रेडल्स यूज करते हैं तो हमें साइड में बहुत कुछ बच्चों को कुशंस फिट करने पड़ते हैं, ताकि एकदम थी पेलू शॉक थी बच्चों उठी ना जाए, डरी ने उठी ना जाए, चमका ही ना जाए। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स। तो आप आई कुड रियली रिलेट आप जो बोल रहे हैं मैम। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जी जैसे हमारा ये नेक का कर्व है जो, हाँ, जी जैसे बच्चा सीधा सो के उल्टा होता है, वो पूरा वजन शोल्डर पे डाल के धीरे धीरे होता है, और उल्टे से सीधा होता है तो भी वो शोल्डर पे वेट डाल के, तो शोल्डर गर्डल इज स्ट्रेंथन, शोल्डर गर्डल स्टेबिलिटी, शोल्डर गर्डल कोर मसल्स आर स्टेबिलाईज, सो नेक अपने आप सीधी रहती है और हेड अपने आप स्टेबल रहता है। तो हमारा जी ये जो कर्व है, वो जैसे ही बच्चा हाथ पे वेट लेता है, टेकिंग वेट ऑन द फोर आर्म्स, दिस कर्व स्टार्ट्स कमिंग, दिस इज डेवलपमेंटल कर्व। ये नेक का राइट जो कर्व है वो डेवलपमेंटल है, बर्थ से तो हमें एक ही कर्व मिला है और एक फिक्स कर्व है जो सेक्रम का है, लेकिन ये डेवलपमेंटल कर्व है। जितना हम शोल्डर्स पे बच्चे को डेवलप करेंगे, उतना ये नेक कर्व अच्छा सा होगा, और आगे जाके अभी जो सबको नेक प्रॉब्लम आ रही है, स्पॉन्डिलोसिस एंड लिस्थेसिस एंड डिस्क लीजन्स, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जब बच्चा उल्टा सो के घुटने पे आता है और क्रॉल जैसे जैसे करता है, वैसे ये लंबर कर्व जो नीचे का कर्व है वो भी डेवलपमेंटल कर्व है, वो डेवलप होता है, वो मैच्योर होता है, और उसके हिसाब से ये दो डेवलपमेंटल कर्व जो है बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, क्योंकि गर्डल, हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल बहुत अच्छे से स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए जी पोस्चरल इश्यूज बाद में नहीं आते हैं। अभी इतने जी पोस्चरल इश्यूज क्यों आ गए हैं, ये टॉडलर्स यूज हो करने लगे हैं, तब से ज्यादा ये इश्यूज आ गए। बहुत बोलने का है, लेकिन विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक आप जो बोलते हैं ना कि दादी और नानी के नुस्खे होते थे पहले जमाने में, जो कहानियां कहा जाता था कि बेटा ऐसे करो, तो हमें फॉलो करनी चाहिए। वेरी करेक्ट, उनको ट्रू। सीखना चाहिए। यस, उसके वेरी सबके ट्रू। पीछे आई थिंक देयर इज अ वैलिड रीजन, साइंटिफिक रीजन, जैसे आप बता रहे हैं मैम। दैट्स वेरी ट्रू। मैम, नाउ कमिंग टू द कोविड टाइम्स, अगर हम उसकी बात करें, बहुत ही चैलेंजिंग साल रहा सबके लिए। बच्चों ने पूरा टाइम स्क्रीन के साथ निकाला है, क्लासेस स्क्रीन पे, स्कूल स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब स्क्रीन पे हो रही थी। तो हाउ ऑफन मैम एक पेरेंट को उनके बच्चों का जो पोस्चर है वो करेक्ट करना चाहिए? क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी मे बी आप आंसर एक्सपेक्ट करते होंगे कि मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में ही बताऊं, तो मैं थोड़ा माइंड बॉडी पे जाना चाहती हूँ कि जी इतनी सारी प्रेशर्स थी बच्चों पे, ऑफ कोर्स टीचर्स पे भी उतनी ही थी, लेकिन यू नो, टू थ्री थ्री चिल्ड्रन इन द हाउस, इवन मदर वर्किंग फ्रॉम होम, फादर वर्किंग, देयर वाज सो मच ऑफ प्रेशर। और इतने टाइम में होमवर्क करेक्ट करना था, इतने टाइम में होमवर्क करना था, इतने टाइम में उसको बैठना था, हाँ, फिर फीड उधर ही, खाना भी उधर ही मिलता था, ये था, तो पूरा एक शेड्यूल, एज आई सेड, पुअर पोस्चर एंड पोस्चरल इश्यूज आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अभी यहाँ जी हम डिसिप्लिन की बात करते कोविड के टाइम में, तो बहुत डिफिकल्ट फेज था, बट देन ऑल्सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो नॉट ओनली द पेरेंट्स बट इवन द स्कूल शुड कम अप विद दिस, कि एवरी 20 मिनट्स ब्रेक देना चाहिए था, बिकॉज सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स मोर देन 20 मिनट्स इज इक्वल टू वन सिगार स्मोकिंग, ऐसे कहा गया है। तो अभी ये बच्चे जो है उनका पोस्चरल मसल्स डेवलप अच्छे से नहीं हुए, उनका स्ट्रक्चरल ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है, और ऐसे स्लाउचिंग पोजीशन में बैठे हैं, स्क्रीन का कोई ठिकाना नहीं रहा था, ठीक है, और कीबोर्ड्स का यूज जो कर रहे थे, हाँ, कभी एल्बो पीछे रहते थे, कभी एल्बो आगे रहते थे, उससे भी पूरा डिस्टॉर्शन हुआ था। तो जी ये एक एस्पेक्ट थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है कि दे शुड हैव बीन गिवन फ्रीक्वेंट ब्रेक periods देना of चाहिए। time, frequent जी episodes of little standing and do some stretches, maybe some जी shoulder girdle activities कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा breathing पे focus कर सकते हैं, maybe to have a glass of water, they can go and have a glass instead of keeping the glass of water near the table, because time constraints होते हैं, उठ के कैसे जाए ये है, तो it would be good कि थोड़ा सा चल के पानी पी के वापस आके बैठ जाए। It sounds little weird, but if this is to be continued for longer period, I think so this needs to be taken care of. So एक तो बॉडी अलाइनमेंट को अच्छे से मिलता है, एक सर्कुलेशन, एज यू वॉक लिटिल बिट, थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। बैठे बैठे थोड़ी फुट मूवमेंट्स के लिए आप एनकरेज कर सकते हैं।
फुट टैपिंग, हील रेज, टू रेज, आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को भी ऑनलाइन गाइड कर रही हूँ, और मैं ये सब गाइडेंस देती हूँ कि जहां भी बैठे हो फुट टैपिंग करते रहो, शोल्डर श्रग्स करते रहो, so you are balancing between the upper and the lower torsos and things can be taken care of. ब्रीदिंग पे आप थोड़ा ब्रेथ अवेयरनेस, जब सीख रहे हैं तभी आप ऐसे ये इधर से लो उधर से लो नहीं कर, बट वॉट एवर यूर डूइंग जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर ब्रीदिंग, बट जस्ट अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग। यू कैन करेक्ट योर सेल्फ, स्क्रीन आपके सामने अगर है तो थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं शोल्डर श्रग्स करके, ब्रेथ अवेयरनेस पे, एंड फोकसिंग मोर ऑन एक्सलेशन रादर देन इनहेलेशन। स्ट्रेस, whenever you are stressed you should focus more on exhalation rather than inhalation। और कोविड में तो बताया गया है इम्यूनिटी बढ़ानी है तो पफिंग, हफिंग और कफिंग के बारे में काफी कुछ रेस्पिरेटरी प्रोग्राम्स में भी कहा जा रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। ओके, अलाइनमेंट, circulation to move around in frequent intervals of time, and definitely breath awareness, food habits, no more slouching, the desk, the sitting table and the desk, there's so much of desk ergonomics and everything, we cannot go into the detail of it, but definitely the child should be encouraged to sit with the elbows rather relatively either at the level of the waist but not retracted। जैसे ही ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे तो ये फॉरवर्ड हेड हो जाता है, तो ये गलत है। बट सी इफ यू आर सिटिंग दिस वे थिंग्स आर फाइन। नेवर अलाउ देम टू सिट विद द डैंगलिंग फीट, इफ द फीट आर सपोर्टेड। इसीलिए मैंने बताया कि फाउंडेशन, अवर फीट आर सेट टू बी द फाउंडेशन। एक काइनेस्थेटिक अवेयरनेस, पूरी हमेशा एक सेंसेशन जा रही है ब्रेन को कि यहाँ फीट रखे हुए हैं, तो फीट सपोर्टेड पोजिशन में बिठाना बहुत जरूरी है। फीट कुर्सी के पीछे डाल दिया तो आप करेक्ट करो, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं कि कोविड के टाइम में हम कर सकते थे या अभी भी कर सकते हैं। आई थिंक इट्स नॉट लेट, तो हम आज से भी बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं ये सब चीजें। और yes. जैसे मैम बता रहे, आई थिंक वी अडल्ट्स आर आल्सो रोल मॉडल्स। हम घर से काम कर रहे थे, बड़े भी काम कर रहे थे, हम कितनी बार अपनी जगह से उठ के पानी का ग्लास लेने गए हैं? वो शायद आई डोंट थिंक सो, राइट? हमने भी वहां ही बैठ के पानी पिया, वहां ही बैठ के खाना खाया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। सो आई थिंक वंस वी स्टार्ट डूइंग इट, बच्चे बिल्कुल हमें देखेंगे एंड दे विल ट्राई टू इमिटेट, दे विल ट्राई टू प्ले द सेम थिंग जो हम कर रहे हैं। तो हमारा उनके लिए रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। बाकी मैम जो भी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आज से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मैम, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। यस, मैं अपना जी। एक एग्जांपल देती हूँ। बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑफ एचओडी एंड प्रिंसिपल, यू नो, वंस यू आर ऑन द चेयर यू बिकम और यू काउच पोटैटो, आप बैठ ही जाते हो चेयर पे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना होता है एवरी टाइम ना, एंड आई ऑलवेज फील प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। So two peons standing outside, sitting outside the office. So every time, if I had to call someone, I used to go and say, tell कि चलो next को भेजो। वो बेचारे प्यून्स इतने, मैडम प्लीज आप बेल बजा दो। I never kept the bell on my table. I used to, because practice before you preach. बिल्कुल बिल्कुल मैम, If I wanted एब्सोल्युटली। a glass of water, I used to open the door and hey, bhai, chalo, please give me a glass of water. This, and that's how you maintain your health, hygiene, and harmony at all levels. इसलिए बिल्कुल पूछते मैम। एनर्जी कहाँ से लाते, तो I always say practice before you preach. It's very very important. बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सही बता रहे हैं मैम। मैम, नाउ इफ वी कम टू द कंसेप्ट, आजकल बहुत सुनने को मिलता है चेयर योगा। तो अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इज इट सेफ टू डू योगा ऑन चेयर या फिर योगा मैट्स? Yes, something is better than nothing. You cannot compensate anything than the yoga mat. But yes, everything has to be done on. But see, while the child is learning something or in front of the camera, उस time अगर बैठे child बैठे, you can go for some yogic warm up exercises in between. Because yoga is, as abhi jaise yoga is not a gymnastic or acrobatic skill. Yoga is just not being body conscious. Yoga is being aware of every moment. तो जैसे मैंने बताया, breath awareness at all levels, connecting oneself to the breath and focusing on breath awareness, inhalation, that itself is yoga. Yoga is connectivity. Whatever you are doing, if you are totally connected to what, that also is yoga. But as you have asked me, I would specify, as I said,
कि don't entertain them to do yoga on chair. Definitely, it's better before they start sitting on the chair in front of the screen for their regular schedule. I think so 15-20 minutes of yoga stretches should be given. Yoga stretches, I'm using the word, where you can go for little body awareness patterns. But suppose if that is not possible, and if you really want between two classes, two lectures, two periods, you can give a break of 5 minutes. That time you can introduce at least one or two asanas. So there are three or four very interesting asanas which can be practiced by these children with interest, but just not the technical movement. Explain to them the meaning of whatever asana you are giving. So, as for example, Parvatasana, the mountain pose, जी they relate a lot. Drawing में भी mountain आता है तो एक triangle ही draw करते हैं. But we know that mountain is not of one size and one shape. There are so many different types and shapes and ranges of mountain. But what does mountain signify? Mountain signifies broad base of support. Broad, I should have broad outlook. My feet should be firmly placed, so my base is wide. And then the alignment, So slow and steady wins the race. Mountain is always known for generosity. Mountain always gives everything. Our personality also should be like that. If ये थोड़ा सा समझा के फिर आप उसको टेक्निकली ये थोड़ा एलिवेट करके थोड़ा स्ट्रेच दो, तो whatever slouching has been there can be corrected. So Parvatasana, I'm trying to cut short as much as possible. Okay, so जी that is, you can go for mountain pose with meaning and everything. जी Then second would be a skyscraper pose. जी Skyscraper. Okay, sky is the limit. हम बच्चों को ऐसे बताते हैं कि you have to go ahead in life, you have to be successful, you have to do this, you have to reach out to this level. तो हम ये सब बताते हैं, लेकिन if we just inculcate in them the core values of love, care, compassion, humbleness, humility, all these things. तो ये थोड़ा थोड़ा help. तो you can just make them stretch the arms, and you can just, okay, as you go on stretching, as many good values come to your mind, love, care, compassion. तो ऐसे stretch करते करते फिर धीरे से harsh करके वो नीचे लाए. तो स्काई स्क्रेपर पोज कैन ऑल्सो बी गिवन. You can give them little twists with breath awareness. So many things can be done. But जी namaskar asan, one of the best. We are doing prayers. We pray before we start anything. But COVID के जमाने में सब prayer करना भूल गए थे, शायद maybe I might be wrong also. But सब screen पे prayer भी ऐसे ऐसे. But the posture itself is so fulfilling. So you are stimulating both your neural points in the palm, and you're ready to have a very nice chuck grasp for writing or for using the keyboard. So Namaskarasana is one of the best pose to start with. Then you can go for Parvatasana, then you can go for Right. skyscraper, and there are many. So just I mentioned about two, three, जी but with meaning and breath awareness. जी 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो. तो पेरेंट्स आप हमें देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू यूज दिस आसन. और आई थिंक मैम ने जो आसन बताए, पर्वत आसन है या स्काई स्क्रैपर है, सब कुछ ये हमारी स्ट्रेचिंग से हमारे मसल्स वगैरह काफी रिलैक्स भी होते हैं. एंड बच्चे आई थिंक दे विल फील गुड, क्योंकि थोड़ा सा एक ब्रेक अगर उनको बीच में मिल जाएगा तो उनके पोस्चर पे काफी बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा ये चीज. क्योंकि उसके बाद आई थिंक काफी टायरिंग हो जाता है. दे कंप्लेन ऑफ देयर शोल्डर पेन, दे कंप्लेन ऑफ नेक पेन. तो ये सारी चीजों से उन्हें दिक्कत कम आएगी. आई नो इट इज डिफिकल्ट, बच्चे ऑलरेडी यूज टू हो गए एक पैटर्न से, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे मैम ने बताया कि उसके पीछे की इम्पोर्टेंस उनके साथ अगर हम शेयर करें, कुछ एक स्टोरीज शेयर करेंगे, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू अडॉप्ट टू इट. सो मैम नेक्स्ट एक बात अगर और बताना, एक बात, सॉरी. जी मैं चेयर योग पे मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे. जी तो जी व्हाट आई मीन बाय चेयर योग, इट इज जस्ट नॉट सिटिंग ऑन द चेयर एंड डूइंग दिस फिजिकल वर्कआउट. जी Being responsible to the chair on which you are sitting, whether you're a student, whether you're an executive, whether you're a boss, or whether you're a teacher or anything. Chair commands respect, right? That is what my concept of chair yoga is. So being राइट responsible to the chair. So ये भी थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में हम चेयर योग के बारे में बताए तो थोड़ा समझा सकते हैं कि why we are going for all these things. तो चेयर योग के मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड किए हैं. जिसको इंटरेस्ट है, बिकॉज चेयर योग इज टू मी इज मोर ऑफ स्पिरिट, माइंड, बॉडी, जस्ट नॉट only sitting on the chair and doing physical जी workout.
Very, very nice, ma'am. Thank you so much for the information. And surely, I do watch her videos most of the time, and they're very inspiring. I think आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. As a parent, first you understand the concept, and then it is easy for you to translate it to the kids. आपके बच्चों को आप easily समझा पाएंगे. पहले आप समझ लीजिए उस चीज को. So Yes. thank you so much, ma'am, for that. मैम आगे बढ़े तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि क्या रॉन्ग पोस्चर जो है वो जेनेटिक हो सकता है? Yes, there are some structural anomalies right from the birth, जिसको हम congenital anomalies कहते हैं. तो जी हाँ, तो उसके लिए भी प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि उसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऑलवेज a proper guide consultation should be done. Anything that you do with the body, I think so first proper evaluation and assessment is must, rather than just giving technical correction exercises, जी because I have seen दो चीजें बहुत कॉमन है जो बहुत इग्नोर हुई है. मैंने मेरा ये 42 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, तो मैं स्पेसिफिकली विद गर्ल्स श्योरमैन काइफोसिस हम कहते हैं, और एक स्कोलियोसिस करके एक डिफॉर्मिटी है. तो श्योरमैन काइफोसिस में पूरे पूरे द पोजिशन इज द शोल्डर इज एलिवेटेड एंड पूरी स्पाइन ऐसे बेंड हुई हो गई होती है. और स्कोलियोसिस में सी शेप कर्व हो गया होता है स्पाइन का. तो ये कंजेनिटल एनोमलीज है और हम वो देखते नहीं है. बेचारी जो बच्ची है वो शोल्डर पेन कभी कंप्लेन करती है, कभी हिप पेन कंप्लेन करती है, और सीधा अगर नहीं चलती है तो उसको इतनी नैगिंग मिलती है, सीधा चलो सीधा चलो, पैर ऐसे क्यों रख रहे हो, एक पैर बाहर निकल रहा है एक पैर बाहर. लेकिन उसका रीजन स्पाइन हो सकता है, जिससे वन लेग शॉर्ट और वन लेग, दैट इज एपरेंट शॉर्टनिंग. वो ट्रू शॉर्टनिंग नहीं है, लेकिन स्पाइन का कर्व ऐसे हो गया है तो एक पैर छोटा दिखता है एक पैर बड़ा दिखता है, और फिर वो चलते हैं तो ऐसे थोड़े लिम्प आती है. दैट गोज ओवरलुक्ड टिल द एज प्यूबर्टी एज 12-14. जब सिलाई जब कपड़े सीने जाते हैं तभी कितनी बार टेलर ने बताया है कि ये ऐसा ऐसा है, एक एलिवेटेड है. तो दिस आर सम कंजेनिटल एनोमलीज. सो रेगुलर चेकअप ऑफ स्पाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सो राइट फ्रॉम द इन्फेंसी लेवल ये करेक्शन चेक असेसमेंट होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, और प्रिवेंशन प्रोग्राम्स पे जाना चाहिए. मैं आपसे वही अब पूछने वाली थी मैम कि इतने साइंस एंड इंडिकेशंस आई थिंक आपने जो बताया वो बहुत बहुत सही है कि हम कुछ हद तक करेक्ट करते रहते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो इग्नोर हो जाता है, तो वो इग्नोर यस नहीं होना चाहिए एज अ पेरेंट. तो अगर यस आपको ऐसा फील होता है कि भाई बच्चा बहुत हद तक सही नहीं चल रहा है या फिर अगर लिम्प करके चल रहा है या एक तरफ से झुका हुआ है, तो वो क्यों है, आई थिंक उस समय आपको आपके जो भी कंसल्टेशन है आपको वो प्रॉपर करना चाहिए. तो मैम अगला यही सवाल था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पेरेंट को किसे जाके संपर्क करना चाहिए? See, I pick up from the last question itself. कितनी जी बार ऐसा हुआ है because of atmospheric changes, because of lifestyle, because of food habits. अभी हम देख रहे हैं कि आई प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है. तो इतने सारे बच्चे हैं जिसको एक आंख में हाई हाई मायोपिया नंबर है, एक में कम है. तो सी जी जिस साइड आपका लो नंबर है और जिसमें हाई, तो हाई नंबर तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू लुक दिस वे or you look this way. So it's see, we don't correct the eyes and we don't check the glasses. हम आई साइट को चेक नहीं करते हैं, और वो कभी लगता है कभी तो नहीं होगा. अभी तो frequent assessment of eye also is required when you see feel that the tilting is more. कभी ear infections अभी हो जाती है because of less exposure. There are so many issues nowadays. So your regular follow up of your checkups, eye checkups, both should be done with the proper specialized. डेंटल इश्यूज बहुत सारे आ गए, बहुत ओवरलुक हुआ है ये टीएम जॉइंट डिसफंक्शन, और स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ टीएम जॉइंट. ये जो जॉ और इसका जो ये बिकॉज गुस्से में रेज में बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, और इतने सारे प्रेशर्स है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है, टीचर्स के एक्सपेक्टेशन है, फ्रेंड्स के, तो उसमें वो रेज की वजह से ये दांत हमको ना कचकचाते हैं, दांत जी कचकचाना. तो उसमें जी ये जॉ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसकी वजह से डेंटल इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ से ही पोस्चर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस एक एक्सपर्ट से लेना जरूरी है. बिकॉज आई एम अ फिजियो, आई विल नॉट से कि यू शुड ओनली कंसल्ट अ फिजियो. इट विल ऑल डिपेंड ऑन
what has been the root cause. I always say, reach to the cause, just don't treat the symptom. और अभी क्या हो रहा है, पोस्चर खराब है, पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज दे दो, ये आसन दे दो, वो आसन दे दो, ये स्ट्रेंथनिंग दे, नो, रीच टू द कॉज. And there have been many such evidences that small corrections and the child is so happy about it. स्कूल Right. बैग्स कैसे कैरी करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. पॉकेट्स में क्या क्या रखते हैं, पॉकेट में पीछे रखा है, एक पॉकेट में ज्यादा वेट डालते हैं, एक में कम डालते हैं, तो एक बाजू हाथ ज्यादा रहता है. ये बहुत सारी इश्यूज है. द टाइप ऑफ फुटवेयर, अभी पेरेंट्स लाइक गिविंग देयर चिल्ड्रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर, अलग अलग फैंसी फुटवेयर दे दिया है. आप देखो कि पहले के जमाने में जो फुटवेयर होती थी, तो फुटवेयर को पकड़ता था, simple stick, and the foot muscles used to hold the foot. तो अपने आप फाउंडेशन स्ट्रांग होता था, तो पिलर कभी भी टेढ़े नहीं होते थे और अपार्टमेंट सही रहता था, द स्पाइन. अभी क्या हो गया है, फुटवेयर फुट को होल्ड कर रहा है, तो योर द फुट इज बीइंग पैसिवली होल्डेड by straps and bands and laces and all that, and that's how पूरी डैंगलिंग हो रही है. तो बहुत सारे इश्यूज है बच्चों को संभालने में, और ये सब ध्यान रखते रखते आप काफी कुछ पोस्चरल इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं. सो स्कूल बैग्स, क्लोथिंग्स, फुटवेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस. Try to eliminate stress from the child's head as much as possible. A friendly atmosphere is very, very important. वेरी ट्रू मैम, बहुत सही बता रहे हैं. एंड व्हाट आई आल्सो फील इन दिस कि मैम, अगर एज अ पेरेंट अगर मेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो अगर उसे चश्मे आ गए हैं, अगर उसे किसी और चीज की जरूरत लेके सपोर्ट लेके चलना पड़ता है, तो आई थिंक मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर हम एज अ पेरेंट ये सोचते हैं कि यार इसको अभी से चश्मे आ गए, आगे जाके क्या करेंगे, बधाने आम कैसे, सो व्हेन हाँ, वी in that perspective people are going to think, but why are we thinking about that? As a parent, मेरे लिए मेरे बच्चे का कंफर्ट और उसका पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लूं और अपने बच्चे को सही समय पे वो सपोर्ट दे दूं, तो शायद उसको आगे जाके लाइफ में दिक्कत कम आएगी. yes, दैट्स व्हाट आई फील एज अ पेरेंट. yes, very important. जी Yes, मैम. मैम, आई थिंक ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव है, और आप इतना डिटेल्स, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप इतने से सेशन में such, हमें जितनी ज्यादा डिटेल्स दे सकें. बट वी आर रियली हैप्पी कि हमने बहुत कुछ सीखा. आई मीन इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग. जब मैं आपसे जब भी मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है आपके साथ कांटेक्ट में आना. मैम, जाते जाते व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं? yes. I would, as I started with, posture is reflection of your inner self. जी. Try to be happy within. It's a key element in today's life. Laughter is said to be the best postural correction exercise. It is said. बच्चे अभी हंसना भूल गए हैं, तो let them have a free laughter. Give them space to feel comfortable within the family situation. That is important. Try to inculcate a very good self esteem within them, because as high the self esteem, so will be the self confidence, so will be the self image, और naturally एक posture सही ढंग से वो अपना कैरी कर सकेगा. तो हाई सेल्फ, give them good words of praise. It's very well not to have competitive posture depends on all these things. So simple postural correction exercise muscles की नहीं है. Postural correction हमारे thoughts, emotions, feelings, virtues, values, सबसे हमें बच्चे के posture को संभालना है, and it does definitely wonders. थैंक That's यू. my थैंक यू. carry home message. एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स ऑडियंस, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन. और मैंने बहुत पर्सनली सीखा है, आपके लिए भी. एज अ पेरेंट बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. तो अगर हमारे बच्चे की सेल्फ एस्टीम सही रहेगी, बुलंद रहेगी, तभी वो अच्छे से अपना पोस्चर कैरी कर सकेगा. जैसे मैम ने बताया कि अगर आप पॉजिटिव हैं, आप हैप्पी हैं, तो आपके ऑटोमेटिक शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं और आप गर्व से सीना तान के चलते हैं, हम ऐसे कहते हैं ना. तो आई थिंक वो बहुत मैटर करता है ये सब चीजें. तो एज अ पेरेंट मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि
आपका चाइल्ड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चश्मा पहने या चाहे वो दांत में ब्रेसेस लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका इनर सेंस, जो उसका इनर सेल्फ है, अगर वो सोल हैप्पी है, वो खुद हैप्पी है, तो आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। So thank you so much, ma'am Nilima ma'am, for joining us on Parent Station. It was a privilege to have you here with us. It was my pleasure to always have a wonderful, because I always see a very nice smiling face in front of me whenever I talk to you. See, laughter is the best medicine. Absolutely. Laughter is the best therapy, and laughter is said to be the best abdominal exercise, जिसको हम core strengthening कहते हैं. जी बिल्कुल So, मैम। thank you so much, Parent Station, Thank you so and much, and for giving me the opportunity to share my views. Thank you so थैंक यू much. मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड ऑल्सो बी थैंकफुल टू पेरेंट स्टेशन, जो हमें ये माध्यम देता है आप तक पहुंचने के लिए और कुछ ना कुछ नया लेकर आने के लिए, ताकि आपकी पेरेंटिंग जर्नी और भी स्मूथ और भी जॉयफुल हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू एंड बाय बाय।